Hello everyone, this is our second video of the BT batch, and in this lecture we are going to cover the exam kit question of chapter 1, the business organization. और आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया है और आपने एक बार क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो द की इस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि तीन एस्पेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से? कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल एंड सोशल अरेंजमेंट। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इट्स बी। ओके, अब उसके बाद है हमारा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला है हमारा, प्राइवेट कंपनीज कैन रेज शेयर कैपिटल बाय एडवर्टाइजिंग टू द जनरल पब्लिक। नो, फॉल्स, because private company cannot offer shares to the general public. Okay, so it's a false. And then private companies can raise share capital from venture capitalists. True, they can. Venture capitalists तो कर सकते, जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते. Okay, the public sector is normally concerned with which of the following activities? Making profit from the sale of goods. अच्छा, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, नॉट पब्लिक कंपनी। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? जो गवर्नमेंटल सेक्टर होता है, जिसमें कि हमारा बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है वो मेन मोटिव होता है। तो मेकिंग प्रॉफिट, नो। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप फंडेड फ्रॉम चैरिटेबल डोनेशन, नो। द प्रोविजन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विस, यस। चौथा भी पढ़ देते हैं, गिविंग फंड बाय सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर टू प्रोवाइड कॉमन सर्विस, नो। उसके बाद है, अ कंपनी इज अ कंपनी विच स्पेशलाइज इन forestry. It have recently purchased B company which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A but which is no longer able to use. The resort have proven highly profitable and popular. Which of the following best explain the reason for the improved performance of the combined entity? ओके, ए कंपनी है जो कि फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइज है और उसने बी कंपनी को परचेज करा है जिसकी रिक्रिएशनल रिसोर्ट की चेन है। ओके, और ए ने अलाउ करा है बी को कि वो नए रिसोर्ट्स बिल्ड करे ऑन द लैंड जो कि ए ओन करता है, लेकिन वो नो लॉन्गर एबल टू यूज, मतलब तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रिसोर्ट्स हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल और पॉपुलर प्रूव हुए हैं। तो अब कौन सा इनमें से बेस्ट एक्सप्लेन करता है रीजन फॉर द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड एंटिटी? तो व्हाट है? स्पेशलाइजेशन, सोशल इंटरएक्टिविटी, सिनर्जी। व्हाट इज सिनर्जी? Synergy means combination of different things like synergy of knowledge, synergy of time, synergy of money. Synergy means इकट्ठा करना, एक जगह कंसंट्रेट करना, दैट इज सिनर्जी। ओके, तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा सी, सिनर्जी, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं दोनों अपने अपने उसको, रिसोर्सेज को वो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई सिनर्जी। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनी इज करेक्ट? Public limited company have access to a wider pool of finance than partnership or sole trader. Seems correct. लेकिन आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Both public and private limited companies are allowed to sell share to the public. No, only public companies can share. Uh, only public company can sell their share to the public. Companies are always owned by many different investors. No, that's not always the case. अगर प्राइवेट कंपनी है तो हो सकता है कि वो कुछ ही इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ठीक है। Shareholders are liable for any debt the company may incur. No, shareholders are
only liable to the amount they have invested in the company. So A would be correct. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप, चैरिटी एंड कंपनी। हमें चार ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है अलग अलग तरीके की, और हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज बोथ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो दोनों होगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये तो पब्लिक है। तो फर्स्ट तो जिसमें भी हो तो काट दो, मीन्स ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देन सेकंड, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, तो सेकंड भी नहीं होगा। चैरिटी, यस ये हो सकता है, चैरिटी तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों हो सकता है। और कंपनीज, कंपनीज भी तुम्हारी प्राइवेट सेक्टर हो सकती हैं, और लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकती। ओके, और कंपनी जो है वो तुम्हारी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ओके, तो द आंसर इज ओनली थर्ड, charity को be option. An organization that is owned and democratically controlled by its member. To which type of organization does this definition relate? Of course, corporative. कॉर्पोरेट में होता है, कॉर्पोरेटिव में होता है ऐसा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हारी ओन्ड और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होती है बाय द मेंबर। मैंने क्लास में बताया था एक यूके का एग्जांपल, यूके में सबसे बड़ा कॉर्पोरेटिव है जिसका कॉर्पोरेटिव ग्रुप नाम है और 5.5 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं। ओके, देन एट, Westeros is an organization which imports computers in country A and sells them to the public in order to make a profit. It is owned by 15 individual investors, each of whom owns an equal number of shares in Westeros. Westeros is not a public limited company. Which of the following is likely to be most appropriate source of finance for Westeros? Hmm. सी, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर नहीं बेच सकती, तो इश्यू ऑफ शेयर टू द पब्लिक तो हो ही नहीं सकता। ओके, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा उन्होंने, लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक इज नॉट लाइकली द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स। ओके, व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट वुड फंड अ प्राइवेट कंपनी? ओके, मींस in some cases they can, but A is also not the most appropriate source. So what is the remaining option? B, the existing owner of Westeros. Okay, sometimes you have to make the elimination approach कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, अब नाइन्थ है ट्रू एंड फॉल्स। Not for profit organization have varied objectives which depend on the need of their member or the section of society they were created to benefit. यस ट्रू, उनका कई तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उन्हें किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया गया है, तो उन्हें उनको बेनिफिट पहुंचाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। Yes. Then the primary objective of government funded organization is to reduce cost of their operation and thus minimize the burden on taxpayer. The primary objective of government funded organization is to reduce cost of their operation and thus minimize the burden on taxpayer. No, no, that's not the case. गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, so their primary objective is not to reduce the cost of their operation and minimize the burden on taxpayers. This would be false. Then tenth is, which of the following statement is true? Limited company status means that a company is only allowed to trade up to a predetermined turnover level in any 1 year. No, definitely not. That's wrong. For organizations that have limited company status, ownership and control are legally separate. Of course, that's true. Okay.
सब कुछ नोट्स में है, सब कुछ मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। आराम से उसे पढ़ो और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम हमारा स्टडी हब पे। ओके, स्टडी हब पे जो हमारे क्विज़ेस हैं उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम चलेंगे क्विज़ वाले सेक्शन में, चैप्टर 1। लेट्स स्टार्ट। First is business are formed for a number of reasons. The statement below relate to which reasons for the establishment of a business. When people came together, their may be more than if they all carried out the same work as separate individuals. Of course, this is the example of synergy, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आउटपुट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये आपका सिनर्जी का एग्जांपल है। और सेकंड, ब्रिंग टुगेदर पीपल विद अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड क्वालिफिकेशन, ये स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि इसमें कई तरीके के लोग आ रहे हैं जिनके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स है और हर कोई किसी न किसी स्किल्स में स्पेशलाइजेशन करेगा। ठीक है, एक ही इंसान को सारा काम सारी चीजों में स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके, एक ही इंसान को सारी चीजों में स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। Read the following statement about public sector organization. Which two of these statements are true? Public sector companies are never expected to make a profit. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो पहला तो जिसमें हटा दो। They are owned by trustees. नहीं। They aim or objective will be to provide a public service. Yes. Third and fourth. And fourth, they are funded by the government. Which item best describe an organization? ऑर्गेनाइजेशन के तीन वो है हमारे पास, कलेक्टिव गोल, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस एंड तुम्हारा सोशल अरेंजमेंट। ठीक है, टीम वर्क, क्लियर रोल लीडर ना ना, एनर्जी क्लियर रोल लीडर ना, टीम ऑब्जेक्टिव रूल कॉर्पोरेशन ना, कलेक्टिव गोल, कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर। सोशल अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। The primary objective of a commercial business is to maintain growth, generate profit, and continue as a going concern. Yes, it is a true statement. ओके, क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? अपने ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट अर्न करना। Which of the following organization would rely most heavily on value for money indicator and efficiency rather than information on performance and profitability? तो performance and profitability पे तुम्हारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो इन फैक्टर्स पे रिलाई करती है। ओके, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे। अब वैल्यू फॉर मनी इंडिकेटर पे कौन करता है? A private accountancy college? No. A local authority? A small retailer? A pension fund? I think it would be a local authority because they would provide the basic services to the public. So I think the answer should be B. Let's check. Yes, 100% correct. Now let's move to the practice part. Here we have four questions. Let's do this. Which of the following organization would rely most heavily on value for money? ये तो अभी हमने करा है, का लोकल अथॉरिटी है। Which of the following source of finance would be available to a government local authority? Government local authority. Okay. Retained earning, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, लोन कैपिटल, शेयर इशू तो नहीं कर सकते, वेंचर कैपिटल कैपिटल भी नहीं कर सकते। आई थिंक रिटेन्ड अर्निंग। लोकल अथॉरिटी शेयर इशू नहीं कर सकती, वेंचर कैपिटल भी नहीं होगा। आई थिंक द आंसर वुड बी ए। बी। A, C, and D all relate to company with shareholding. Local authority do not issue share. Okay, retained earning is also a company part. Share issue तो of course था ही, venture capital भी था। Okay, so the correct answer would be B.
Okay, so here is question 3. Which two of the following are characteristic of a limited company but not a corporation? Maximizing the excess of income over expenditure, not a primary objective. It is a primary objective of limited company. Okay. Then member can vote according to the number of share owned. स्कॉर्पियो लिमिटेड कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव में आपको पर्सन के बेस पे वो मिलता है वोटिंग राइट, लेकिन लिमिटेड कंपनी में या कंपनी में क्या होता है, आप जितने परसेंट ऑफ शेयर ओन करते हो आपके पास उतने परसेंट वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड शेयर कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द मेंबर। ये चीज भी लिमिटेड कंपनी में हो सकती है पर कॉर्पोरेटिव में नहीं हो सकती। Okay, all members are invited to attend the annual general meeting and participate in decision at the meeting. No, this is a corporate type characteristic. Which one of the following is a feature of all organization? Objective of making a profit? Not important. Structuring of tasks to achieve the organization objective. Controlled by professional managers who do not own the organization. ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बी वाला तो हर किसी में होगा। यू हैव टू स्ट्रक्चर द टास्क ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। Correct। एक बार सारे रिव्यू कर लेते हैं। एक हमारा गलत हुआ था। फर्स्ट वाला तो एक्सप्लेन कर दिया था पहले। सेकंड भी हो गया था। थर्ड, only shareholder have voting power related to the number of shares that they own. Member of cooperative organization can vote but will only have one vote. Cooperative may be owned by members, but ownership stake cannot be exchanged between members unless the member belongs to limited company. Okay. And fourth, very simple. While many business organizations have the objective of making a profit, other organizations have a different primary objective. For example, not for profit organization. Some business organizations are managed by their owners, for example, partnership and many corporates. Okay, and even full trading. Okay. So, okay, that's all for our first chapter. Next class, we will start our second chapter, and I will try to finish that in one video. Okay, the lecture can be long, but please make sure to attend this. And if you found this lecture helpful, make sure to subscribe the channel, like the video, and hit the bell icon to stay updated on the further video. Bye.